मुकाबला फ्रॉम द बॉटम निकला टॉप डाला पैसा तो मुनाफा माँ पे गाली सीधा लाफा रैप द नाका सुनते बांग्ला मुझे थाका मैं 5 स्टार के कपड़े पहन के खाता मैं हूँ धाबे पे स्ट्रीम्स हो या ड्रीम्स अब पूरा कामयाब मैं कोहली वाला माइंडसेट और धोनी जैसा शाप मैं हर पब में जी और गेम है मेरे हाथ में हंसता सीधा बैंक तक 50 वाले लाफ में हा भाई तू है वीक और मैं लेता हफ्ता खुद के तेरे हाथ नहीं तूने रखा चमचा पूरा गैंग ग्राइमी हा टॉप सीधा शॉट्स तेरे ब्रेन तैयार हो दुनिया के सबसे बड़े ई क्रिकेट गेम रियल क्रिकेट 24 के लिए JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League. Excellent piece of fielding. Oh, he's launched this superbly. देखो 8 जाबाज टीम्स को fighting for glory and 2.51 crores. जब रगों में दौड़े क्रिकेट का जोश और दिल में हो love of esports. With real cricket, India gives e-cricket to the world. बुला रहा है जीत का डिजिटल मैदान. Let's go! Catch the action on Jio Cinema. Pacer has been brought into the attack. Looked impossible. That's his 100 on a top-class inning. Excellent fielding. Huge appeal. And he's given it. Gigantic six. Whoa! Undid the batter with a beauty. Direct hit. He's a gun fielder. He's launched this superbly. ये है दुनिया का सबसे बड़ा ई क्रिकेट एंड एंटरटेनमेंट लीग बेस्ड ऑन रियल क्रिकेट जहां पे गेमिंग, ई क्रिकेट, एंटरटेनमेंट एंड ई स्पोर्ट्स का पूरा मिश्रण देखने के लिए मौका मिलेगा। This is the JetSynthesys presents Global E-Cricket Premier League जहां 48 प्लेयर्स खेले हैं पिछले 10 दिन और आज आखिरी 5 मैचों के बाद हमें मिल जाएंगे हमारे वो टॉप 4 टीम्स जो खेलने वाले हैं GEPL फाइनल्स। कहां पे? In none other than the Chhatrapati Shivaji Maharaj क्रीडा स्टेडियम बालेवाड़ी पुणे में। बट यहाँ पे जाने से पहले कैप्टन, बहुत टुडेज डे नंबर 11 इज सुपर क्रूशियल। अल्टीमेट शोडाउन रहने वाला है। आपने जरूर बात किया था कि जो टॉप में अभी टीम्स है मीनिंग द टॉप 2 जरूर उनके पास 16 पॉइंट्स है बट दैट इज नॉट गोइंग टू बी एनफ टू क्वालिफाई बिकॉज लंदन राइनोस कल जीतने के बावजूद एक स्लिम चांस रखते हैं कि वो एलिमिनेट हो सकते हैं। एक बहुत नैरो चांस है वो, लाइक वो मार्जिन अगर हम मेजर करने की बात करेंगे तो वो ऐसे मेजर की जाएगी। आज दुबई वाइपर्स को लंदन राइनोस को एक बहुत बड़े गैप से हराना पड़ेगा, चाहे वो विकेट्स में हो चाहे वो रन्स में हो, सारी चीजें हम जरूर देखने वाले हैं। एंड आयरॉनिकली ये दोनों का मुकाबला ही है जो हम देखने वाले कुछ टाइम बाद। लेकिन उससे पहले भी देखिए आज न्यूयॉर्क एप्स का भी 2 मैचेस बाकी है, तो न्यूयॉर्क एप्स अगर दोनों मैचेस जीत जाती है they'll get 18 पॉइंट्स ओवरऑल एंड न्यूयॉर्क एप्स कंफर्म कर लेगी अपना क्वालिफिकेशन। बट उनके अलावा टेंशन कौन कौन सी टीम्स में है? यस, दुबई वाइपर्स में है, कोलकाता हॉक्स में है, मुंबई ग्रिजलीज में बहुत ज्यादा टेंशन है। बट इनके अलावा 1-2 टीम्स है जो कि अभी अपना गेम तो खेलेंगे। देखिए सिडनी चेन्नई वो अपना मैच खेलने वाले हैं, उसमें जो भी रिजल्ट्स होगा इट वोंट मैटर सो मच। पॉइंट्स टेबल में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव हम आज भी देख सकते हैं, स्पेशली जो ओपनिंग मुकाबला रहेगा चेन्नई वर्सेस न्यूयॉर्क एप्स। चेन्नई वोल्स के लिए देखिए उनके गेम्स अभी सिर्फ इसी मुकाम पर आके खड़े हैं कि वो किसी दूसरे का गेम खराब कर सकते हैं। न्यूयॉर्क एप्स कुड बी द परफेक्ट टीम टू बी स्टॉप बिकॉज न्यूयॉर्क के आज 2 गेम्स है, पहला हारते हैं वो प्रेशर में आ जाएंगे, फिर दूसरे में क्या होगा हमें बिल्कुल नहीं मालूम। तो हर एक गेम आज बहुत ज्यादा क्रूशियल रहेगा। क्यों हम इतना सारा डिस्कशन कर रहे हैं कैप्टन? इट इज मेनली बिकॉज द टीम्स
4 teams need to reach to the GEPL final, जो हमने already वेन्यू के बारे में बता चुके हैं. But कौन होने वाले वो 4 टीम? अभी हमारा जो एनालिस्ट थे चेतन सारी टीम्स को इकट्ठा करके बता रहे थे कि what can be the chances, what can be the probability जो वो क्वालिफाई कर सकते हैं हमारे GEPL फाइनल्स के लिए. एंड क्यों लड़ रहे हैं वो? हमारे सामने पहले दिन से ये ट्रॉफी है, उस ट्रॉफी के लिए जहां पे वो चैंपियंस कहला सकते हैं. साथ ही में एक बड़ा प्राइज मनी 2.51 करोड़ एंड साथ ही में जीतने वाली टीम को, उनकी पूरी टीम को पर पर्सन Bajaj Pulsar NS 125 मिलेगा. That is what they are trying for. And of course, Lenskart जो मुझे आज सुबह ही ये glasses मिला है, special edition, and I thank Lenskart for that. Of course, आपको भी मिला है ना? Yes. Flexing it from day one. I'm here. He's flexing it from day one. मैं तो आज ही मौका मिला है. But without any further ado, देखिए साहब, we know this is a very important day. हंसी मजाक खत्म हो चुका है. जो भी हमने देखा, it's done in the past 10 days. But आज it's all about seriousness. It's all down to business. Every team here, जो भी चढ़ेंगे स्टेज पे, they are gonna fight it out till their very last breath. मान लीजिए ये जंग है और इस जंग में सिर्फ 4 टीम्स आगे बढ़ेंगी, लेकिन वो कौन सी होंगी उसके लिए हमारे पास रहेंगे सिर्फ और सिर्फ 5 मैचेस. लेकिन before we move on further, we would of course love to thank all our sponsors. Our title partners, none other than JetSynthesys, our official partners, Lenskart, Bajaj Pulsar NS 125, through Global School, Finolex Pipes, Fleetcard Filtering. उसी के साथ साथ हमारे और भी ऑफिशियल पार्टनर्स रहने वाले हैं फ्लिपकार्ट, AMD, Gigabyte, LG Ultra Gear एंड Zebronics. हमारे ब्रॉडकास्ट पार्टनर स्पोर्ट्स 18, हमारे स्ट्रीमिंग पार्टनर जियो सिनेमा एंड ऑफ कोर्स हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स रियल क्रिकेट 24, स्काई esports एंड ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन. वेल ये तो कहानी आज हम लिखने वाले हैं. हमसे ज्यादा प्लेयर्स जो है एक अलग स्टोरी लाइन लिखेंगे आज के दिन, लेकिन कौन जाएगा GEPL फाइनल्स में, कौन उठाएगा वो चमचमाती हुई ट्रॉफी को, इसी के ऊपर सारा का सारा एक्शन. हर दिन आप शाम के 5 बजे न्यू एपिसोड्स विल बी ड्रॉपिंग इन. आप जाके देख सकते हैं नए एपिसोड्स भी एंड जो भी एक्शन अभी तक हुआ है ऑन जियो सिनेमा. एंड आवर फाइनल्स, जैसे हमने बोला GEPL फाइनल्स को जो हमने देखने वाले हैं, इट इज गोइंग टू बी नन अदर देन द वेन्यू, अ स्टेडियम जहां पे ये क्रिकेट का चीयरिंग जो आप जियो सिनेमा में देख रहे थे वो फाइनली ऑडियंस के साथ एक्सपीरियंस करने के लिए मौका मिलेगा. एंड उन ऑडियंस को बड़े सरप्राइजेस रहने वाले हैं. यू विल हैव अ चांस टू मीट एंड ग्रीट. इस सब के लिए आपको आना पड़ेगा टू नन अदर देन छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडा स्टेडियम, बालेवाड़ी, पुणे में. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस देयर. we'll see what happens there, and we'll see you on the other side, जहां पर बहुत सारे डिस्कशंस अभी भी बाकी है. But even after 51 matches and 10 days of non-stop exhilarating action, we are still trying to figure out who it is going to be into that final, that grand finale at the Balewadi Stadium. Hello and welcome to JetSynthesys presents the Global E-Cricket Premier League, and we are at the ultimate day of the league stage. Now, of course, yesterday we did see London, I'll use the word, almost making it to that top 4, becoming the leader out there of the charts. But I'll tell you what, there is a trick out here. And to decode that, joining me along is my expert, Chetan Narula. Chetan, welcome. Last day, lot of expectations. Hi, Roshan. Yes, lot of expectations, lot of anticipation, lot of excitement in the air here. 5 matches, only one of them is a kind of a dead rubber. And I won't even call that dead rubber, Sydney versus Chennai. Because, you know, you're playing for pride. But what can we talk about the other 4 matches? So much on the line. London Rhinos obviously top of the table. Like you said, almost through. But you can never win against mathematics. And that's why there are 4 other teams that can finish on 16 points. It's going to be hella interesting. Yes, of course, and for the last time, for the league stage at least, we'll take you through how things went. We started out with the registration, remember, lakhs across the country went for that registrations. Eventually, the top 100 were chosen to get into that GPL qualifiers, eventually in a challenge mode to that first ever draft. And it brings us to this close league, 10 days of action. It is the final day today, and we will be deciding who will be going into that land finale on the 8th of December at the Balewadi Stadium. And then, of course, that's how things look like for now. Remember, the first 2 rankings there, I mean, the teams want to be there, Chetan. Oh, yeah, absolutely. And the best part I like about is that the GPL finals are written in glittering gold and black. Just tells you that it's going to be an amazing affair, the GPL finals day. Obviously, rank 1 and rank 2 will play the qualifier 1. And the loser will get a second chance in qualifier 2. Rank 3 and rank 4 will compete in the eliminator, progressing, the winner progressing to qualifier 2. Obviously, you want to be the top 2 ranks, and there are
there are 3 teams in contention today who could finish as rank 1 and rank 2. They are New York. We'll take a look at the teams. Here we are. They are the 3 teams that can finish at rank 1 and rank 2. New York Apes, the best chance. They're playing 2 matches today. And we have the big game, Dubai Vipers versus London Rhinos. The winner also goes on 18 points. So these 3 teams in with a chance of getting into those top 2 ranks. And now, of course, what is the most interesting thing out there is the points table for the day. We'll have a look at that because this is the most important thing today, Chetan. Yeah, London Rhinos just on the cusp of history. They are on 16 points from 13 matches. That should be good enough, but there's a big but. Why? Because of that run rate. And you know what? We are competing against mathematics here. There are 4 other teams that can finish the day on 16 points. London are playing Dubai as well, who want to increase their own run rate. So, a lot of mathematical calculations remaining. 16 points should be good enough to get to top 4, but again, I'm saying this, we'll wait for the net run rate calculations depending on the scheduling. New York Apes, like we had mentioned, the only team that has, you know, its own fortune in its hand. They can get to 18 points happily. London and Dubai, if they win that game, they can get to 18 points, which would give them top 2. Mumbai Grizzlies' only chance today, they are on 12 points. Their only chance today is to beat Kolkata and hope that Chennai do them a favor and beat New York Apes. So we'll be talking about the points table again and again. And this is going to change, and this is going to keep us hooked throughout the day. It's going to keep us hooked, of course, and also keep us on the tip of our toes because these are the most important, remember, and the last 5 games in that league stage. The first game, New York taking on Chennai, remember, and like I did mention, Chennai possibly could do a favor. Well, they tried doing that yesterday to spoil the party, but they couldn't. But here, of course, New York in its very crucial game in the right from the start. London take on Dubai, remember, eventually we have Sydney taking on Chennai, and then that most important game, Mumbai versus Kolkata. Absolutely. I mean, look at the two sides, Chennai and Sydney. They don't have much to play for in terms of qualification, in terms of points table, but they are playing for pride. And you use the word party poopers, you know, now there's 2 teams who can play party poopers. Chennai, you know, obviously, they would want to do a favor to Mumbai. We'll have to ask them that. Surjit is good friends with Mumbai captain. And, you know, that becomes really vital. So, very, very vital games. London, Dubai, Mumbai, Kolkata. New York playing 2 matches. New York, Delhi. That last game of the day. The last game of the round-robin league stage. And that is going to be absolutely bonkers. Well, what is also going bonkers is the talent prediction because this is how it's going to look like. Oh, wow. New York for the start. Everybody out there. Yeah, because they're playing against Chennai, and I can just hear Krebs talking in my ear that Chennai will win. I mean, come on, Krebs. He's also cheering for Mumbai today, I guess. But Dubai, London, even Steven, everybody's gone for Sydney. Nobody's giving Chennai a chance. I mean, they'll have to spring a surprise again. Maybe because the stakes are high. Yeah, and then match for 3. And look at the last one, 2 Delhi and 2 New York. This is going to be a bonkers day. And then, of course, it is New York Apes taking on the Chennai Wolves. Remember, the last time these 2 teams played, it was New York who won comprehensively by 3 wickets. Now, Chennai, let's remind everybody, are out of the competition, but played 2 games today. They're playing for pride, isn't it? Oh, yeah, playing for pride, playing for passion. I mean, let's talk about passion. They are here because of passion. We'll come to that. New York Apes, they have a lot to do. They're playing 2 matches. Pure kismat unke haath mein hai. Aap dono match jeet jao, you're top of the table. You will finish as first on that points table, but there's still a long way to go. So we'll not talk about this team. Kamal and JD. JD is a fantastic captain. We spoke to Razin. Netaji, you know, the only hat-trick taker. Jetu and Jitu, you know, I want to call them twins. They have been fantastic. This team needs to come up tops like London did yesterday. And on the other side, of course, the Chennai Wolves out there, remember, they've played 12 and lost 9 out of it. But again, a lot of positives as well in that contest. You'll have to wait and watch if they can do some fireworks at the end. Manoj and Anurag there, also the captain Surjit, who has been in decent form. Yeah, and you know what? Anurag has been in runs. Manoj has been in runs. What I want to see from them today is a collective effort. आप real cricket खेलते हैं, passion की वजह से खेलते हैं, game की वजह से खेलते हैं, and these guys have done so well to come here, be a part of the top 48 players. I want to see a lot of passion from the Chennai.
team, The Chennai passion, team. of course, has been incredible throughout that entire 10 days that we've had, remember, into that final now. Of course, final day for the league stage, but final eventually. और हम आपको इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ स्टैट्स के बारे में नहीं बताते, सिर्फ पॉइंट्स टेबल के बारे में नहीं बताते. इट्स नॉट जस्ट अबाउट द क्रिकेट एक्शन अलोन और द ई क्रिकेट एक्शन अलोन. यहाँ पे हम आपको कहानियाँ भी सुनाते हैं, यहाँ पे हम आपको प्लेयर्स से भी मिलवाते हैं. तो चलिए आज मिलते हैं एक और ख़ास प्लेयर से. इनका नाम है सुरजीत सिंह. ये हैं कप्तान चेन्नई वुल्व्स के. और क्या कहें इनके बारे में, जिंदगी के उतार चढ़ाव देखकर ही आप अपना सीना चट्टानों की तरह मजबूत करते हैं. आइए सुनते हैं सुरजीत की कहानी. मेरा नाम सुरजीत सिंह है. मैं पंजाब के एक शहर मोगा से बिलोंग करता हूँ. बचपन में मेरे मतलब कि 4-5 साल का था तब से मेरे फादर का देहांत हो गया था. तो उसके बाद से फिर मेरे को मेरी मॉम ने ही संभाला है. मतलब लोगों के घरों में उन्होंने काम भी किया है. मतलब मैं 12 तक ही पढ़ पाया, लेकिन बाद में मैंने खुद जॉब करके और कुछ मॉम ने भी सपोर्ट किया है. मैंने किसी तरह अपनी पढ़ाई पूरी की और अपनी प्राइवेट में अपनी BA कंप्लीट की. उसके बाद मुझे एक हॉस्पिटल में जॉब मिल गई लकीली. तो हॉस्पिटल में जॉब मैंने 2-3 साल की एज एन सियाम ऑपरेटर, एक्सरे ऑपरेटर. तो उसके बाद फिर मैंने किसी के साथ एक पार्टनरशिप में एक दुकान की थी. तो उसमें मुझे काफ़ी लॉस हुआ. मतलब वो मेरे पार्टनर ने चीट किया, तो मेरे को हिमाचल में जाके पेट्रोल पंप पे भी काम करना पड़ा था. तो वहाँ से वापस आके मैंने एक मोबाइल कंपनी ज्वाइन की. तो वहाँ से एक्सपीरियंस लेके अभी फ़िलहाल मैं एप्पल में जॉब कर रहा हूँ. तो बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ. फिर RC खेलना स्टार्ट किया मैंने लॉकडाउन से जस्ट पहले. तो दविंदर और सुखप्रीत ये भी उस टाइम से खेले. दविंदर उससे भी पहले खेला था. मैं और दविंदर ने जब छोटे छोटे टूर्नामेंट खेलने स्टार्ट किए थे, जब मल्टीप्लेयर आया था. तो इसने भी अपना चैनल बनाया, मैंने अपना चैनल बनाया RC20 के ऊपर. मैंने RC22 भी खेला तकरीबन 5-6 महीने. तो उसके बाद इनका चैलेंजर मोड आया था, तो मेरा उतना ध्यान नहीं था, मैं गेम के ऊपर इतना फोकस नहीं था. लेकिन फिर आया GPL. तो GPL आने के दिन ही उन्होंने मुझे मैसेज आया सुखप्रीत का और दविंदर का, दोनों का, कि भाई तू अपनी गेम दोबारा स्टार्ट कर दे. अब esports का टाइम आने वाला है और एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट अनाउंस हो गया. तो तब से मैंने लेके अभी खेलना स्टार्ट किया और बहुत ब्लेस्ड फील कर रहा हूँ यहाँ पर आके. मतलब एक सेलिब्रिटी लाइक एक्सपीरियंस है मेरे लिए. कोई भी इस सीज़न में आपने देखा होगा कि हमने एक भी मैच ऐसा नहीं हारा कि वन साइडेड ही हार गए हों. तो हमने ये सीज़न भले नहीं जीता है, मैचेस ज़्यादा नहीं जीते, लेकिन हम फिर भी चेन्नई वाले दिल जीत के जा रहे हैं. और इन द लास्ट हमारे जो भी सपोर्ट स्टाफ थे, हमारे मैनेजर्स, हमारा क्रू, तो जो लोग भी कास्ट कर रहे हैं, मैंने देखा राज सर भी रात को जाग कर सुबह 6 बजे की स्टोरी होती है उनकी. मतलब वो कितनी मेहनत से, कितनी शिद्दत से लगे हुए हैं इसको सफल बनाने के लिए, इस कम्युनिटी को बड़ा करने के लिए. तो मैं अपने दिल से सभी को थैंक यू करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा उन्होंने हमें प्लेटफॉर्म दिया है. इसके लिए GPL का और हमारी टीम की तरफ से, हमारी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत थैंक यू, जो हमें इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दिया है. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. Piyush, hey, I was just on Lenskart. ये जो price है $999, right? नहीं करण, रुपीज है. I can't be seen wearing glasses under 1 lakh. Price थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्या? करण, ये बढ़िया प्राइस है. It's only because we don't have middlemen. 90,000? आप कहीं और से ले लो. 80,000. I'm going. Bye. अमीरों की हाई लगेगी तुझे. फैक्ट्री वाले प्राइसेस, नो मिडलमैन. लेंसकार्ट, डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. There, of course, I'm pretty sure इन्होंने matches नहीं जीते होंगे पर दिल ज़रूर जीत लिए यहाँ पे. And this is what makes it so beautiful. I think, I mean, all of these guys out there, you know, young guys out there who are giving everything that they have eventually to make it a grand success. The results, of course, you can always talk about it.
the playing, the stats and everything. But what gets them together is the fact that these are the ones who have played throughout the tournament. We'll have a look at the players to watch out for in this contest. Very important from that perspective. Remember, Manoj coming there, but again, the eyes will be on Kamal to come out and perform a very crucial match for them. Yeah, I'm backing Manoj to come good today. You know, last 2 games for Chennai. Just do what you love doing with real cricket in your hands, that mobile device in your hands. But talking about Kamal, unka focus aaj alag hoga. Look at that strike rate, 261. He's used the power plays really well. 31 fours and 11 sixes. His 6 hitting percentage is among the top batsmen in the tournament. The same goes for the fours. In fact, his fours hitting percentage is the highest in the tournament. So you can see how important he is in the power plays. And when he plays those long innings in those remaining overs, it's going to be down to how Kamal uses those power play overs once again. It will be very important, certainly, because the New York Apes, of course, they can come out all guns blazing. We have seen in the tournament where if you can do well in that first 2 overs, you can actually win the game almost 50% there with the kind of runs on board. Of course, for now, we'll have to see if that happens. But let's go down to the toss where our host is ready with the umpire and the captains. Thank you so much, Roshan and Chetan, for the wonderful insights. But without any further ado, मैं बुलाना चाहूँगा दोनों ही टीम्स को स्टेज पे. न्यूयॉर्क एप्स का बहुत इंपॉर्टेंट मुकाबला है. आज 2 मुकाबले रहेंगे उनके. ये पहला मुकाबला, क्या वो चेन्नई से जीत पाएंगे या फिर क्या चेन्नई बनेगी न्यूयॉर्क के रास्ते का कांटा? सारे सवालों का जवाब मैच में जरूर मिलेगा. बट फॉर नाउ प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर. डे नंबर 11, पहला मैच आज के दिन का. दोनों टीम्स प्लीज स्टेज पे आ जाइए. न्यूयॉर्क एप्स एंड चेन्नई वुल्व्स. Mania is here. Maniacs wanted. अब आगे कुछ भी हो सकता है. निकर और टी-शर्ट पहन के आया साइकिल लोन लगा के फोन बता दे सबको बच के. All flights to remain grounded. चारों गाड़ी जिद कर देगी. जो खुद की सुनते हैं दुनिया उनकी सुनती है. लेंस का आकड़ है. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. वेल, टॉस उतना ही जरूरी है जीतना जितना कि आप मैच में जाके अपना डेडिकेशन, अपने स्किल सेट को दिखा पाए. इसीलिए दोनों ही कैप्टन्स को मैं बुलाना चाहूंगा. सुरजीत, कैप्टन ऑफ चेन्नई वुल्व्स, एंड जगदीश कुमार, कैप्टन ऑफ न्यूयॉर्क एप्स. सबसे महत्वपूर्ण टॉस ये हो सकता है आज के दिन का, लेकिन देखते हैं कौन जीतेगा. वो फॉर दैट लेट्स कॉल ऑन स्टेज द अंपायर. कुड यू प्लीज क्विकली कम अप ऑन स्टेज. एक बार अंपायर के लिए भी तालियां हो जाए यार. ओके, हु इज कॉलिंग? जेडी सुजीत. आपका कॉल है? ऑलराइट, जेडी's call. Heads is the call and heads is the toss winner. मजेदार. क्या लोगे? रुको आपसे बाद में. पहले सुजीत से बात करेंगे. आपका तो प्रेशर मैच है ना, आपका प्रेशर मैच है ना ये, तो आप थोड़ा हल्का हो जाओ जीत के. अच्छा सुजीत भाई, आप बताओ वो क्या लेंगे, उसके बाद तो मैं आपको पूछूंगा सवाल. बट अगर आप टॉस जीतते आप क्या लेते? बैटिंग ही लेता मैं. बैटिंग ही लेते आप? तो उनको बॉलिंग करने का मौका देते आप? उनको हमारा क्या उनका चांस है. तो आज आपका मुद्दा क्या है? मतलब कि बस मजे करने हैं या फिर न्यूयॉर्क को रोकना है, ऐसा कुछ ऑब्जेक्टिव है आपके दिमाग में कुछ, या फिर बस अपने प्राइड के लिए खेल रहे हैं आप? प्राइड के लिए नहीं खेल रहे हैं, हमको बस मैच जीत के खाना खाने जाना है, भूख लगी. एक बार जोरदार तालियां सुरजीत के लिए. अभी क्या चूज कर रहे हैं आप? जब बड़े भाई ने बोल ही दिया उनको बैटिंग पहले करनी है तो कर ही लो.
तो कर ही लो, मतलब बॉलिंग करेंगे आप जी। चलो बॉलिंग के लिए आपको तो बहुत बहुत क्या बोल सकते हैं, मतलब ऑल द बेस्ट ही मैं बोल सकता हूँ अभी, ठीक है, इस जगह पे खड़े होके। लेकिन आज 2 मैचेस है आपके, मैंने ऑलरेडी बहुत बार ये चीज़ मेंशन की है। एंड पहला मुकाबला अगर आप नहीं जीत पाते हैं चेन्नई के अगेंस्ट में, बहुत मुश्किल हो जाएगा। जेडी आपको भी पता है ये बात, क्वालिफाई होना। तो आपका कुछ कंटिजेंसी प्लान है दूसरे मुकाबले के लिए? लास्ट 3 मैच से हमारे साथ यही हो रहा था कि अगर आज का नहीं जीते तो फिर सारे मैच जीतने हैं। जी, तो अभी भी वही प्लान के साथ जाएंगे, सिंपल। वेल, टॉस आप जीत चुके हैं, बॉलिंग आपने चुन ली है। एक बार आप दोनों जरूर हाथ मिला लीजिए, क्योंकि ये मुकाबला यहाँ पर एक वो थंडर क्लैप वाला अगर आ जाता ना तो काफी मजा हो जाता। बट कोई बात नहीं, इसी के साथ साथ हम जरूर हमारे एनालिस्ट के पास वापस चलेंगे टॉस के बारे में, एंड ऑफ कोर्स क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी उसके बारे में भी वो आपको थोड़ी बहुत और डिटेल्स दे देंगे। सो एनालिस्ट प्लीज टेक इट अवे। There, of course, the news from the center being the New York Apes winning the toss and choosing to bowl. A good start for them, knowing the fact that a toss can be so instrumental in that game. Chetan, I think good toss for New York to win? Yeah, 97% of the games teams have won the toss and opted to bowl first. और आज बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेने का है आज, you know, like the great Paresh Rawal says. So yeah, no risk at all from New York. Just use the time-tested strategy that they have deployed earlier. Time-tested strategy. Well, we'll have to see if they get to utilize and in fact execute that. But for now, let's go down to our casters, Floki and Crips, who are all ready to give you calling the game. All new Pulsar Mania is here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app or visit your nearest store. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं। लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों और हमारे सारे दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है ग्लोबल ई क्रिकेट प्रीमियर लीग में। मैं हूं फ्लोकी, मेरे साथ है क्रिप्स और हम 11वें दिन पे आ चुके हैं जहां का सबसे पहला मैच खेला जाएगा न्यूयॉर्क एप्स और चेन्नई वुल्व्स के बीच में। क्रिप्स, हमारे एनालिस्ट ने कहा है कि न्यूयॉर्क एप्स को सेफ खेलना पड़ेगा, लेकिन आपको लगता है उनकी प्ले स्टाइल के हिसाब से वो वैसा खेलेंगे? हाँ, आई मीन सेफ खेलने में से कोई बुराई नहीं है। इनफैक्ट वो सेफ खेल सकते हैं, वो चाहे तो एग्रेसिवली खेल सकते हैं, नॉट द अदर वे अराउंड, यू नो। अगर एक टीम नेचुरली एग्रेसिव है, सेफ खेलना चाहती है, तो दे कैन स्केल डाउन, इट्स हार्डर टू स्केल अप। All right, fair enough. Let me rephrase it then. So, do you think the New York Apes will stick to their tried and tested strategy of being more aggressive on the batting front, batting for those boundaries, or do you think they're going to look to hit it hard at the power play overs and then take a chill pill like some of these other prolific batting teams here? Yeah. See, if I was in New York Apes, right, I would be thinking 3 steps ahead. Chennai के सामने you can afford to play a little more aggressively. ये गेम अगर आप हारे, ऑब्वियसली आपके लिए अगला गेम जीतना मस्ट विन हो रहा था, तो आप वो गेम में अपनी ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रेटजी यूज कर सकते हो। तो अगर आपको रिस्क लेना है ना, अब ये वाले गेम में लोगे, नॉट द नेक्स्ट गेम। You know what? I like what I hear, Crips. Let's see if the New York Apes put this to the test, or if they're going to retreat back into their former shells. Apes not really known for having shells, but if they did, well, they'd be in it. Oh, a drop catch to start things off here. New York Apes. I mean, firing on all cylinders. Sure, they wish they'd got the wicket, but nonetheless. कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इसे ट्रायल बॉल समझ के ले लो। मनोज को एक लीज ऑफ लाइफ मिल गई, एक एक्स्ट्रा लाइफलाइन मिल गई उनको, नहीं तो यहीं पे पहले बॉल पे डिस्पैच करते थे उनको रजीन, व्हिच इज अगेन अ चेंज। न्यूयॉर्क एप्स से पहले रजीन को बहुत पहले मिला था, यू नो, जब डे 1 डे 2 चल रहा था, तभी वो लोग रजीन को बेचते थे पहले बॉलिंग करने। बीच में उनका पूरा बॉलिंग ऑर्डर चेंज हो गया, लेकिन एक बार फिर से रजीन इज द फर्स्ट टू बॉल, एंड अनफॉर्चुनेटली आफ्टर ड्रॉपिंग दैट कैच ही विल रिग्रेट इट, क्योंकि अगले ही बॉल पे एक पावरफुल पल्सर बाउंड्री आ जाएगी। बिल्कुल, इस बार चेन्नई वुल्व्स इंटरेस्टिंग बैटिंग ऑर्डर के साथ सुरजीत को यहाँ पे निकाला है मनोज के साथ, ब्रूट विद द बैलेंस्ड, नॉट विद द रैडिकल। We'll see if that strategy works. We've seen some other teams do it, Crips, लेकिन I don't think हमने particularly उसको अच्छा या बुरा करते हुए देखा है. It's just been there. So again, I feel like a bit too early to pass judgment on this opening batting order. Yeah. But yeah, Surjeet now going to be on striking end.
And well, there's going to be 2 balls remaining now in this over. Razin has been one of the more consistent bowlers for the side of the New York Apes. देखते हैं कि यहाँ पे वो एक विकेट ले पाएंगे अपनी ओवर खत्म होने से पहले कि नहीं, लेकिन अगर नहीं भी ले पाते हैं अभी तक उनकी परफॉर्मेंस बहुत शानदार है पावर प्ले Exactly. पावर प्ले के हिसाब से अगर उन्होंने सिर्फ 9 रन्स पे इनको लिमिट करके रखा तो अच्छा है. यहाँ पे 4 भी चला गया तो 13 रन्स होंगे, which isn't all that bad. Oh, have I spoken too soon? I think I did, Trips. And there it is, the caster's curse has finally come back to me. Hey, no, this wasn't our curse, man. It was on me, not you. No, neither of us. Really? Bro, he was supposed to be ducked out. मनोज पहले ही, sorry, मनोज नहीं, मनोज पहले बॉल पे आउट होने वाले थे, लेकिन इस बार सुरजीत की जान गई. So one of them was supposed to get out regardless. We had a bit of a get down, Mr. President moment. I think Surjit यहाँ पे. They were living on borrowed time. Certainly. And well, that marks the end of the first power play over, but there's still another one to go. So another 6 balls here for the Chennai Wolves to try and score some boundaries. काफी धीरे से यहाँ पे फील्डिंग करते हुए. और अब मैं देख रहा था, मैंने ऑब्जर्व किया था जब राजन बॉलिंग कर रहे थे, उन्होंने वो ग्रीन बार पे जो बहुत ही पतला था उस पे उसको रोकने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि आपने हर बार कहा है वो करना बहुत मुश्किल है. बहुत डिफिकल्ट होता है, राइट? आपको प्रीएम्प्टिवली टैप करना पड़ता है, प्रेडिक्ट करके कि कहाँ पे लैंड होएगा वो. हाँ. ओ, लेकिन ये काफी सारे बॉल्स ऐसे जा रहे हैं, फिर चाहे रजीन बॉल करे या जेटू बॉल करे, चाहे मनोज बैटिंग करे या अनुराग, बहुत बार ऐसा बॉल जो है वो बैट को कांटेक्ट करके पीछे की तरफ जा रहा है एकदम स्क्रैप होते हुए. बिल्कुल. एंड दिस विल मेक इट डिफिकल्ट जब वो सिंगल रन के लिए जाएंगे. Yeah, I mean उन लोग के पास आपने जैसे कि हमेशा कहा है स्लिप फील्डर जरूरी है, so we see 2 slip fielders. But well, when you have 2 slip fielders, you leave the sides open, and well, that's going to be a good force straight towards the leg side. The New York Apes are well, you can give away a couple of boundaries considering this is the first 2 power play overs, but not to the extent that you wash over everything that was achieved by Razin in the first one. Exactly. A lofty shot attempted once again in the same area. बहुत ही शानदार. जो काम कर रहा है वो करते रहिए. वही डायरेक्शन में वापस से एक और बार बाउंड्री भेज दिया है मनोज ने, और इसी के साथ चेन्नई का जो रन रेट है वो वापस से बढ़ता हुआ दिखाई देगा. Oh yeah. तो गेंदे जो जेतू ने well, इतने अच्छे से नहीं मारी और वापस से, I mean, well, if it's not broke, don't fix it, as the American saying goes. Leaving only 1 ball in this over now, Crips. I'm actually surprised कि जेतू ने फील्डिंग सेटअप चेंज नहीं की. उनके बाजू में जेडी जो बैठे हैं वो तो डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं फील्डिंग सेटअप चेंज करने के लिए. They taking their time. I think that's exactly what they are doing. देखते हैं वो अपने स्लिप फील्डर्स को रीपोजिशन करते हैं या नहीं. No, nothing. फील्डिंग सेटअप unchanged. I think वो नए टाइप का बॉल डालेंगे. Oh, और वो नए टाइप को बॉल जो आपने कहा था बिल्कुल इनसाइड फील्डर के सर के ऊपर से जाता हुआ यहाँ पे बहुत ही शानदार रीड. और इसी के साथ पावर प्ले ओवर समाप्त होते हैं. दूसरे वाले ओवर में 3 चौके चेन्नई वुल्व्स के लिए. Good shot actually, gets down on one knee. Almost एक ऑफसाइड स्वाइप करने का अटेम्प्ट किया था उनने. Which works. पावर प्ले के खत्म होते ही ये सारी चीजें आप शायद नहीं कर पाएंगे. Oh yeah. I mean, अब फील्डिंग सेटअप चेंज हो चुका है. हम देख सकते हैं कि something resembling an inside outfield. Of course, जगह छोड़ी है यहाँ पे थर्ड मैन की तरफ, लेकिन वो डायरेक्शन में अनलेस आप रिवर्स स्वीप करते हैं गेंद को ताकत से मारना मुश्किल है. या लेकिन अनुराग ताकत नहीं, वो चालाकी लाते हैं. He is the guy who brings the cunningness to the table. The visionary, the all-seeing messiah of Chennai Wolves, keeping it safe for now. As he should, because again, I mean, the Chennai Wolves, they did recover from their slower start. They found some runs to catch up, and they're certainly looking at crossing 60 if they maintain the average that we've often spoken about, 2 runs per ball or 12 runs per over. If they can hit that number, they're looking at a good time on the batting front. But they're going to be one better with that 4. Chennai Wolves, they seize the opportunity. Powerful pulsar in S125-4. Also powered by Anurag. What a shot. यही शॉट के 2 वेरिएशंस उन्होंने पहले भी खेले, दोनों बॉल इंटरसेप्ट कर दिए गए, लेकिन इस बार उनको इंटरसेप्ट नहीं, सीधा डिस्पैच कर दिया गया है. What a ball was that? Off stump goes flying. Clean ball here. So much speed behind that ball. Great swing on it too. And Anurag just got unaware. Did not see that one coming, and I don't blame him because that was way too fast even for my eyes. Yeah.
He just threw his entire arm out, bro. Like, what was that? Yeah. Anything above 140 is very difficult to deliver, and Jeetu does that so consistently. Yeah. I mean, he did give away a boundary, but he redeems himself with the wicket. Yeah, वो भी अनुराग की wicket. Yeah, that's the most dangerous player on the team. Yeah, और हमने काफी बार कहा है कि बैट्समैन को फ्रीडम चाहिए, लेकिन हमने बॉलिंग की इतनी बात नहीं की है. जब आप अर्ली विकेट्स ले लेते हैं तो फाइनल 2 ओवर्स में बॉलर के पास और ज्यादा फ्रीडम आ जाती है. बैट्समैन को डर के खेलना रहता है. Exactly, बैट्समैन को डर के खेलना रहता है, और उसके बाद आपके सारे पावरफुल बैट्समैन जो है वो बचे भी नहीं रहते. सारे बैलेंस एंड डिफेंसिव बचे रहते हैं यूजुअली, डिपेंडिंग ऑन योर बैटिंग ऑर्डर. तो वहां पे तो बाउंड्री स्कोर करना भी डिफिकल्ट हो जाता है. Oh yeah. लेकिन इसी के साथ जीतू की ओवर समाप्त होगी यहाँ पे. न्यूयॉर्क एप्स देखते हैं अब किसको भेजेंगे. के पास नेताजी भी है, के पास जेडी भी है, और लगता है यहाँ पे गेंदबाजी होगी नेताजी की, इससे पहले कि जेडी आए मंच पे आखिरी ओवर के लिए. Netaji, my God, they're sending him out already. They don't want to save him for the last over. Yeah, I like it though, because they sent out Jitendra. He got a wicket, and after that, you know, I mean, if your fast medium bowler is done, you still have your fast pace left. This is probably the best time to use it. And Yeah. Neta is already showing us why. A dot ball on the first one. Yeah, Neta is the fast bowler, and you know what? He doesn't even need to be the fast bowler to get those super fast deliveries in. उनका जो टाइमिंग है बॉलिंग पे वो हमेशा कंसिस्टेंट रहा है. मैंने नेताजी को कभी भी लेस देन 100 की स्पीड पे डालते हुए देखा ही नहीं है. Yeah. और नेताजी के पास अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं, तो वो और लिमिट कर सकते हैं यहाँ पे चेन्नई वुल्व्स को रन्स बनाने से. केवल 10 गेंदें बाकी है पहले इनिंग में. ओह, शानदार शॉट, लेकिन क्या ये फील्डर के हाथ में जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल. मनोज यहाँ पे उनकी विकेट लेंगे न्यूयॉर्क एप्स, और प्रेशर बढ़ते जा रहा है यहाँ पे चेन्नई वुल्व्स पर. शॉट सिलेक्शन बहुत अच्छा था, पोजीशनिंग बैट्समैन की. उनके कारण जो बॉल है वो बैट के टॉप एंड पे लग गई, सेंटर में नहीं लगी, जिससे पावर नहीं मिला, एलिवेशन नहीं मिला. एंड एक और विकेट गिरता हुआ चेन्नई वुल्व्स के लिए. अब सिम्हा आ चुके हैं फील्ड पे, लेकिन अनिल फिर भी स्ट्राइक रिटेन करेंगे. बिल्कुल. 9 गेंदें बाकी अभी, और अभी नेताजी का फोकस शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है. या वापस से मिडिल स्टंप्स पे बॉलिंग नहीं कर रहे वो, बस बैट्समैन को डरा के रख रहे कि मैं चाहूं तो मिडिल स्टंप से मार सकता हूं, लेकिन देखते हैं कि वो मिडिल स्टंप की तरफ करेंगे कि नहीं. जी हाँ, इनफैक्ट दिस टाइम अराउंड रियली गोइंग फॉर द जगुलर. शीश, नेताजी सो गुड, सो कंसिस्टेंट. 4 रन्स दिए हैं उनने सिर्फ, और उसमें एक विकेट भी निकाल लिया. इतने सारे डॉट बॉल्स और इतने सारे वेरिएशंस, nearly impossible to keep up with them. This is another trap ball. This could be a wicket. No, it flies over the heads. Powerful pulsar in his 125-6. Great shot, but that was so risky यार. क्योंकि मैं सच बता रहा हूँ, मैं डर गया था वो वाले में. बिल्कुल. और उसी छक्के की वजह से यहाँ पे चेन्नई वुल्व्स के पास अभी भी मौका है 60 रन छूने का. One opportunity. The man standing between them and that target is JD. Oh my God, what is that ball? ये क्या था? Oh, ये क्या कैच था? भाई ये तो फुल टॉस भी नहीं, ये तो हिप लेवल पे उसने बॉल डाली है. This is beyond Yorker. This is a direct hit to the batsman himself, and he goes flying out. My goodness. JD, he's got the eyes of a stone cold killer, did not even flinch after that wicket. Exactly, bro, exactly. That was a ball intended to murder someone. He threw it at hip length, full toss. Yeah. Ball जैसे ही हवा में गया, you knew that's gonna be an out. Well, we spoke about pressure, and now the Chennai Wolves are down to their final wicket. They have to make some very tough decisions right now. In fact, going for a second. Oh my God, no appeal. So they're going to be safe for now. But man, this is the New York Apes are really out to play. You talked about how they're going to be playing it a bit riskier. This is the match to do it. This is exactly what they're doing. I don't think this is just risky anymore. I think this is just borderline ruthless. Oh, okay. Man, JD really on the money today with these first 3 balls. But again, there's still 3 more to go. Like it is said in the poem Invictus, their heads again of the Chennai Wolves, they might be bloody, but they're unbowed for now. Yeah, but I don't know how much longer they can keep a head on their shoulders. Jagdish has the highest wickets on his team so far. He's looking for his 13th wicket today. Oh, ooh, and a swing and a miss.
Anil just not able to connect. बैकफुट पे खेल के वो शॉट पीछे की तरफ डालने की कोशिश कर रहे हैं. He's trying to target the fine leg area, लेकिन अनिल वो शॉट कनेक्ट नहीं कर पा रहे. आखिरी बॉल, क्या जेडी इस पे भी डॉट ही देंगे? नोप, सिर्फ 2 रन मिलेंगे मैक्स टू मैक्स. और इसी के साथ उन्होंने चेन्नई का टोटल 52 पे लिमिट करके रखा है. 52 runs for 4 losses, and that's going to be the innings from Chennai Wolves. My oh my, some stellar bowling coming out here from the New York Apes, really limiting. All new Pulsar Mania's here. Maniacs wanted. लेंस कार्ड डाउनलोड द ऐप. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. First over itself, very first ball, almost a wicket. Ends with a wicket. Second over comes through. Again, damage limited, but again a wicket found. And then JD comes in. This is some really insane stuff coming out here from the New York Apes. And the Chennai Wolves, well, they better hope that their bowling is better than their batting, because otherwise they are not winning this one. Oh, another thing, by the way, it's not just Chennai who's looking for a win. Agar Chennai यहाँ पे जीतती है, then even Mumbai Grizzlies have a chance to qualify further. So they are playing for 2 lives right now. I see. Okay, yeah, they certainly are. But I mean, I predicted New York would win, but right now, because I like Mumbai Grizzlies, because I'm from Mumbai, I'm hoping Chennai wins. I didn't do those calculations before I gave it my predictions, man. Yeah. I mean, before we give our predictions, we think with our head, but once we're in the game, we think with our hearts. Yeah. As it should be, really. As it should be. That's how you get the spirit of the commentary in. Oh, yeah. The tension, the anticipation, all the build-up and the suspense. My God, the suspense sometimes can kill me. Oh, yeah. And New York Apes starting things off just all right. Again, the required run rate is nothing impressive. It's nothing that the Apes really need to worry about. So we'll see what their priorities are. And their priorities are to win this game and show everyone that they need to be feared. Beautiful pull coming through from Netaji. That almost looked like a helicopter shot. Was it a helicopter shot? Hey, you're the shot expert. MS Dhoni shot? I have no idea. I only know one shot. I call it the ballerina. The cricket fans are probably going to murder me once they see me IRL. But this one. This one's a runner, a slow one. A marathon runner, but still a runner. Towards the boundary, and another 4 coming here for the New York Apes. एक बात है, न्यूयॉर्क एप्स के वैसे भी आज 2 मैचेस हैं, तो उनको 2 मैचेस जीतने हैं क्वालिफाई करने के लिए, वो तो ऑब्वियस है, बट दे आल्सो नीड टू विन विद अ बिग मार्जिन. इसलिए अगर न्यूयॉर्क एप्स ये वाले मैच में जल्दी टारगेट कवर करते हैं, इफ दे फिनिश दिस एंटायर रन चेज इन लेस देन 4 overs, they have a much better chance of qualifying. Yeah. I mean, we've spoken about how the net run rate is really important, or the net run, excuse me. And if you do not focus on that stat, then there's a chance you're going to be tied. And you don't want to be tied, because that's when that run rate stat will come through. So again, the New York Apes just covering all bases here. Another stellar 4 coming through from the balanced batsman on the side of the Apes. Not the Radical, not the Brute, it's Netaji. Netaji has been the most scariest player when it comes to bowling. But my God, he's a scary one for batting as well. कितने boundaries मारेंगे यार? Well, this might not be as impressive. A 6-6 isn't nowhere, but it's still something to write home about. 4 4s in a row. And Ajay, this is not how we plan to open things here. Final ball for the first over. And there is some respite, but man, it came a bit too late. 18 runs in 6 balls. That's a 300 strike rate. Quick math. Quick math, but my God, that is some really quick chasing. Yeah, certainly. The New York Apes, they're really out here to play.
And I like that about them. You know, I like the fact that they're not squeamish. They have this killer instinct. If they know they have an advantage, they will use it. They will ask some very pertinent questions of you. And well, if you've done your homework, you'll have the answers, but... Exactly. I'm glad that you mentioned homework. क्योंकि कभी-कभी लगता है न्यूयॉर्क एप्स स्पेसिफिकली ये होमवर्क करके आए हैं. They know exactly ये प्लेयर्स कैसे टाइप के बॉल डालने वाले हैं, कैसे टाइप के शॉट्स खेलना पसंद करते हैं. Yeah. I think after Dubai Vipers, न्यूयॉर्क एप्स एक इकलौती ऐसी टीम है जो एक इंडिविजुअल प्लेयर को काउंटर करती है. बिल्कुल. I mean, counter-strategy is a common strategy in video games, but this time around, come on, will be taken out of the picture as the Chennai Wolves get a bit of a breather. The Brute has been taken out. And that's a lens cut out for the 300th wicket of this tournament. The 300th wicket also happens to be on the guy who is one of the stronger batsmen in this entire tournament, not just in the team. Kamal 222 runs बना चुके हैं throughout the tournament खुद के लिए. उनका strike rate is one of the highest at 261. So if you get Kamal out, that's a very good thing for the Chennai Wolves. लेकिन unfortunately नेता और जेडी दोनों ही बहुत अच्छे फॉर्म में है, तो कमल को आउट करके फायदा नहीं है. आपको और भी विकेट्स चाहिए रहेंगे. बिल्कुल. और अभी भी न्यूयॉर्क एप्स के पास एक रैडिकल बैट्समैन बाकी है जो जितेंद्र हैं, जो बाद में आएंगे. लेकिन शायद अगर ऐसे ही न्यूयॉर्क एप्स खेलते रहे तो जितेंद्र को आने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये एक और शानदार चौका है यहाँ पे नेताजी की तरफ से. नेताजी तो आज फॉर्म में आ गए भाई. नेताजी ने वैसे इतनी ज्यादा बैटिंग की नहीं है, अब तक वो इकलौते ऐसे प्लेयर है, नॉट इकलौते, आई मीन ही इज वन ऑफ द प्लेयर्स ऑन हिज टीम जो 100 रन्स टोटल इन अ टूर्नामेंट पार नहीं किए हैं. ठीक है. एंड इवन नाउ ही जस्ट नीड्स अ कपल मोर रन्स टू क्रॉस दैट. वाओ. सो this entire time you're telling me he's been playing unselfishly? Yeah, he's been playing unselfishly. Oh, and that's beautiful again. This man is all about business. He does not care about the personal accolades. He only delivers when it is time to deliver, and that time is now. And that's going to be another 4 gift wrap by Netaji, served to his team on a platter. And with that, he also completes 100 runs in the tournament. Oh, Netaji, yeah. He is here to post some big numbers, man. He's got one of the most impressive dot ball rates. And now he's crossed the north of 100 runs. Chasing it down like there's no tomorrow. Ooh, okay. The world of cricket not known for technical KOs, and that will continue in real cricket as well. But yeah, this is those kind of balls, I mean, they would definitely turn cricket into a different kind of sport. But hey, second run attempted. I think it's safe. Jeez, that was close though. It really had me on the edge of my seat there. Yeah. Hey, but finally, JD is here to play. I want to see what the captain has in store for this team. Oh, yeah. Usually JD जब भी आते हैं थोड़े एंड के ओवर्स में आते हैं और टीम को बचा जाते हैं, लेकिन इस बार वो जल्दी उतरे हैं. बिल्कुल. और सुरजीत की बॉलिंग यहाँ पे मुझे लग रहा है थोड़ी सी हावी पड़ रही है जेडी पे. शॉट्स अच्छे से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी जरूरत भी नहीं है अभी. न्यूयॉर्क एप्स अगर वो 2-2 रन बनाते रहे तो वो टारगेट तो पार कर ही देंगे, लेकिन आपने मेंशन किया था कि नेट रन रेट बहुत जरूरी है. या बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और जिस तरह से न्यूयॉर्क एप्स अभी चेज कर रहे हैं, अगर वो चौथे ओवर के पहले ही ये ख़त्म कर दे तो उनके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, देखते हैं फिर यहाँ पे क्या होता है. देखते हैं कि वो मेंटेन कर पाएंगे या नहीं. फील्डर बहुत तेजी से बढ़ते हुए गेंद की तरफ, चौका तो प्रिवेंट करेंगे, लेकिन वापस से यहाँ पे 2 रन मिलेंगे न्यूयॉर्क एप्स को. जेडी तीसरा भाग सकते थे लेकिन नहीं भागे क्योंकि उन्हें स्ट्राइक चाहिए. या एंड दैट्स एब्सोल्युटली नॉट अ प्रॉब्लम. जेडी जो है वो भी एक रैडिकल बैट्समैन है, तो वो भी अच्छे शॉट्स मार सकते हैं. बट जेडी एक ऐसे प्लेयर है जो स्क्वायर की तरफ और बैक साइड की तरफ बहुत ज्यादा खेलते हैं. ही डजंट गो फॉर द फ्रंटल शॉट्स अ लॉट. वेल, फिलहाल न्यूयॉर्क एप्स आई मीन काफी आराम से खेल रहे हैं. सुरजीत की ओवर, सुरजीत की बॉलिंग की रिस्पेक्ट की जा रही है यहाँ पे. फास्ट बॉलर है वो. अगर आपने गलती से भी स्विंग मिस टाइम किया और गेंद स्टंप्स की तरफ है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी यहाँ पे एप्स के लिए. ओके, इंटरेस्टिंग शॉट सिलेक्शन. एकदम विकेट खुला छोड़ते हुए. नो, आई थिंक दैट्स अ गुड शॉट सिलेक्शन. अगर स्विंग जो है आपके लेग साइड पे लैंड होता है, यहाँ पे तो स्विंग ही बैट्समैन के दूसरी तरफ चला गया.
So that's the most common shot जो swing bowlers के खिलाफ use किया जाता है. You just flick the wrist and redirect the ball towards the square side. हाँ, लेकिन जब ball इतना ज़्यादा swing कर रहा है तो I don't think anyone can predict what's going to happen. Yeah. It looked a little wild too. I mean, I did not imagine that Shree would go for that, but interesting. He's also just, you know, even though the situation looks bleak, he's doing his best. That's what it seems like. Well, एक और बात है वैसे, the situation has looked bleak for the Chennai Wolves all throughout the tournament, right? लेकिन फिर भी जिस तरह से वो अपनी determination को बरकरार रख रहे हैं, in the face of certain defeat, they persevere through all of it. That just makes me have so much respect for the Chennai Wolves. Yeah, they're still trying to win the game. They know that there's nothing in it for them at the end of the day, but there's a lot in it for Mumbai Grizzlies if Chennai Wolves win. Yeah, it's certainly in their interest, but yeah, the Chennai Wolves, I have to say, winning for the sake of winning requires a different kind of mentality. And especially when you're in this position, when you know that there is no reward at the end of it, there is no silver lining, no big payout, none of that. You just do it for your own sake. Yeah. You just do it to disrupt everyone. Yeah. I mean, if you're going out, then go out with a bang. Certainly. The next time you walk in, you'll be respected to an extent, but again, of course, the Chennai Wolves, if they were able to put up a better performance earlier, they might not have been in this spot in the first place, although now, that is all said and done. Spilled milk. Yeah, there's no use crying over spilled milk. 4 balls remaining in the second last over here, Crips, और 8 रन चाहिए 10 गेंदों में, काफ़ी आराम से बना सकते हैं, लेकिन I think आपको वो मेंटालिटी के साथ खेलना नहीं चाहिए यहाँ पे न्यूयॉर्क एप्स. आपको हर एक गेंद को वैसे ही ट्रीट करना चाहिए जैसे आप कोई भी और गेंद को ट्रीट करेंगे. Just because you're in a comfortable spot doesn't mean you should feel or you should get comfy. Yeah. I mean, I do feel bad for Anil and Anurag though. वो दोनों ही players apart from this tournament भी बहुत सारे पहले वाले tournaments में खेल चुके हैं. From Real Cricket 20 to 22, and I'm pretty sure they'll continue their careers in Real Cricket 24 as well. वो काफ़ी सारे लैंड टूर्नामेंट्स में जा चुके हैं. इनफैक्ट अनिल तो जीत भी चुके हैं एक लैंड जस्ट 2-3 महीने पहले. एंड नाउ ही इज इन दिस सिचुएशन जहां पे वो अपने टीम के लिए बेस्ट दे रहे हैं. बिल्कुल, तीसरा रन भागने की कोशिश और मिल जाएगा, पूरी तरीके से सेफ है. शानदार बल्लेबाजी न्यूयॉर्क एप्स की तरफ से. नेताजी, आई थिंक MVP अभी तक वो रहे हैं. 37 रन बनाए उन्होंने. पावर प्ले में भी उनका ही जलवा चला और अभी भी वो काफी शानदार बैटिंग कर रहे हैं. ओ जेडी बाउंड्री के पार जाता हुआ वो बॉल छक्के के लिए, और ये मैच का अंत हो चुका है. चेन्नई वुल्व्स ने कोशिश की लेकिन उन्होंने इतना अच्छा टारगेट सेट नहीं किया है, और न्यूयॉर्क एप्स ने बहुत ही धमाकेदार परफॉर्मेंस के साथ यहाँ पे एक मैच जीत ली है. न्यूयॉर्क एप्स इतने सारे बॉल्स बाकी थे उनके पास, इतने सारे विकेट्स बाकी थे, तो एक बहुत ही बड़े मार्जिन से जीते हैं यहाँ पे. बिल्कुल, but that is going to mark the end of the first match. The Apes winning by 4 wickets, thanks to some stellar performances coming out from Netaji and JD. And well, if you want to find out more from the mouths of the players and from our analysts, you're going to have to wait, because we're going to be cutting to a short break, after which we will be back with some more real cricket action. The Mania's here. Maniacs wanted. Lenskart. Download the app now. लेकिन ये पाइप चलेगा. फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं. Ladies and gentlemen, please put your hands together for NewYork Apes. NewYork Apes टेबल के सबसे ऊपर आ चुके हैं अभी NRR में, एंड ऑफ कोर्स 3 टीम्स है जो अभी 16 पॉइंट्स के साथ टाइड अप है. The only difference is the NRR. न्यूयॉर्क, उनके साथ साथ लंदन एंड दुबई वाइपर्स. दुबई वाइपर्स के लिए NRR आज बहुत क्रूशियल रहेगा. But what is going to happen in the next few games? It's going to be phenomenal. क्योंकि अभी भी चेन्नई का एक मुकाबला बाकी है, न्यूयॉर्क का भी एक मुकाबला बाकी है.
सो थियोरेटिकली अगर न्यूयॉर्क अगला मुकाबला जीतती है, दे विल गो इन एज द फर्स्ट सीड। बट अभी के लिए मैं दोनों कैप्टन्स को बुलाना चाहूंगा दोबारा से। सुरजीत, आप भी एक बार आ जाइए, जेडी आप भी आ जाइए। सबसे पहले जेडी आपसे बात करते हैं। पहला मैच जीत चुके हैं, क्या टेंशन उतरा है सर से कि अभी भी वो टेंशन है आपके दिमाग में? जितना टेंशन पहले था अभी भी उतना ही है। अभी भी उतना ही है, बिल्कुल। तो आपका टारगेट वही है कि टॉप सीड बन के जाना है आगे, राइट? टारगेट टॉप सीड नहीं है, टारगेट है सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मैच। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मैच। आई रियली लाइक दिस आइडिया कि एक के बाद एक मैचेस में फोकस किया जाए। बट जेडी, कितना मुश्किल था आपके लिए मैच चेन्नई के अगेंस्ट में खेलना? मुश्किल तो बहुत था क्योंकि इनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं था। इनके लिए ये डेड रबर मैच था, मतलब जो करे कोई फर्क नहीं था। लेकिन हमारे ऊपर ये था कि हमें जीतना ही ये मैच। तो सारे प्लेयर बहुत अच्छा कर रहे हैं। लास्ट हम लोग बैक टू बैक ये फोर्थ विन है हमारी जी। हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हमें सिर्फ और सिर्फ एक मैच पे फोकस करना, वो हमारा फाइनल मैच है। बढ़िया यार, प्लेयरों ने सारों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, चाहे बॉलिंग डिपार्टमेंट हो या बैटिंग डिपार्टमेंट हो, सब में बहुत अच्छा किया। एक बार जोरदार तालियां जेडी के लिए, द कैप्टन ऑफ न्यूयॉर्क एप्स। वेल, मैं सुरजीत से जरूर बात करूंगा। सुरजीत, आपका एक और मैच बाकी है सिडनी के अगेंस्ट में। ये मैच चलिए आप जीत नहीं पाए, लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूं कि बाकी के जो 6 टीम्स अभी मान लीजिए कि हाँ इन्हीं 6 में से कोई जाएगा आगे, राइट? तो उनके लिए, उनमें से आपको क्या लगता है कौन सी टीम जाके वो ट्रॉफी उठा सकती है? अकॉर्डिंग टू मी लंदन राइनोज सबसे ज्यादा चांस है इस बार। लंदन राइनोज के लिए एक बार जोरदार तालियां। और सुरजीत, एक और सवाल लास्ट आपको जाने से पहले। अभी लास्ट मैच के लिए फिर से मजे करके खेलने वाले आप, राइट? तो कुछ ऑब्जेक्टिव आपके दिमाग में, मे बी इस सीजन नहीं हो पाया, अगले सीजन के लिए कुछ आप अलग से सोचे हैं? यहाँ अगर आपको ये टीम दोबारा मिल गई तो वो जाके आप कैसे प्रदर्शन दिखाना चाहेंगे अपना? दिमाग के तो लगे पड़े हैं अभी कुछ दिमाग नहीं लगाना मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सुरजीत, थैंक यू सो मच जेडी। एक बार हाथ मिला लीजिए आप दोनों। एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ गेम नंबर 1। 4 मुकाबले, 4 टीम्स आगे जाएंगी, बट अभी भी कहना कितना मुश्किल है क्योंकि टॉप पे तीनों टीम्स के पास 16 अंक एंड उसके बाद 3 और टीम्स के पास 14 अंक। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से होगा, जरूर जानेंगे हम। लेकिन उससे पहले हमारे एनालिस्ट तैयार है पोस्ट मैच सेगमेंट में आपको डिटेल्स में बारीकी से सारी चीजें बताएंगे वो। वॉइस प्लीज टेक इट अवे। New York Apes, incredible performance. 4 back-to-back victories takes them to the top of the table, and that topsy-turvy table is still chaotic, is still going up the order. We still have another few games left. We don't know where it's going to go. Chetan? Yeah, I mean, we'll talk about the points table in just a bit, but a very close win for New York. I mean, just 4 runs between the two sides. Chennai gave them a bit of a scare, और आज के दिन आपको ये scares की ज़रूरत नहीं है. But again, thankfully, that was the last scary game for New York in a way, क्योंकि अब चेन्नई का जो मुकाबला है वो सिडनी के साथ है, which is going to be a bit of a dead rubber. Well, there, of course, we will build on to that for the next side, but we have a look at the New York Apes right now. Again, Netha and JD, incredible batting performances from them. We did lose Sima earlier on and came out and gave the 4 runs, but then Netaji, there, I reckon, could be a match-winning performance then. Yeah, that was indeed a match-winning performance there, especially because Kamal got out for 4, and that was a good wicket from Simha. But again, you know, we have spoken about it as that अभी बहुत pressure intense situation है सभी टीमों के लिए, especially because you're, you know, on the verge of qualification, you're fighting for the first 4 spots. तो यहाँ पे जो आपके main batsmen हैं, जो आपके in-form batsmen हैं, they have to raise their hands. आज कमल का दिन नहीं था, he still has another game to go, लेकिन नेताजी and then JD, they put up their hands. A captain's knock from JD to get 14 of 7, but Netaji, you know, he's been absolutely phenomenal with bat and ball through this tournament, and today was his day. And then, of course, Chennai did give them a little scare, like you mentioned earlier on, but again, it's a test of character when you're playing such incredible games. The stakes were more high, of course, for New York, no doubt on that, but Chennai was there. You spoke about going out with pride. Well, they will probably have to wait for another game. We'll have a look at that. But that's how things look like for Chennai Wolves. Again, Manoj coming out to fire 24 runs. Sujit, not really the kind of game you would have wanted. Yeah, 24 from Manoj, Anurag's 11, and 16 not out from Anil. Quite scary for New York. और बाकी टीमें देख रही थी, especially London और दुबई देख रहे होंगे, because if New York had lost that, at least London would have straight away qualified. So yeah, 4 wickets there from the New York Apes. They just managed to pull it back. JD for me, the standout player there, or the standout bowler in fact. 1 for 4. Netaji 1 for 10. I think he's done enough for man of the match at a very, very crucial juncture.
And I think we love to talk about the fact that, I mean, Neta has been one incredible player who has been, you know, we've seen an all-round performance from him. How important it is for players like him to really fire in such crucial games? It is. Like I mentioned now, it is a very, very pressure-intense situation. आपको हर मैच जीतना है. Even when you're playing against a side which has been already eliminated, आप risk नहीं ले सकते. आप उनको easy नहीं ले सकते. आपको you have to be on the money. आपको अपना intensity पूरा रखना है. आपको अपना performance पूरा रखना है. From that perspective, players like Netaji and JD stepping up with runs and wickets, especially क्योंकि आज कमल का दिन नहीं था. Then, of course, we'll have to wait to see who the man of the match is. No doubts, I reckon it should be Neta without a doubt. We'll see that. And, well, there it is, 37 runs. Remember, he's the same incredible guy who's taken a hat-trick so far in this contest. And now also adding to the runs as well. 6 fours out there, that's massive. Oh yeah, massive. And with the strike rate of 264, so he was not taking risks, you know, he was not playing lofted shots. और आज हमें वो shots कम दिखाई देंगे. बहुत कम players हैं. I'm thinking of Biswas as one player who will play lofted strokes, or maybe not. I mean, yesterday he didn't. But yeah, great knock from Netaji. Doing the job, getting the job done. और खास करके जैसे हमने कहा ना कि जैसे कमल out हुए, you know, he was not going to take those extra risks. He was not going to play aerial shots, not let the power play, you know, go. Let the power play go, just chase that down. और उन दोनों ने बहुत अच्छी सोच से ये ये स्कोर पुट अप किया. हमने एक चीज़ ज़रूर देखी कि हमने बात भी किया था पिछले मैच में कि अब न्यूयॉर्क जो है एक पीक पर आ रही है. हमने देखा था बहुत लगातार लॉसेस से जा रहे थे और आपको ऐसा लग रहा है कि सही समय पर अब उनको जीत मिलना शुरू हुआ है. You can say that because you know, I think if we look back at what they have done, this is the most informed team, I guess. इससे पहले सिर्फ लंदन है जिन्होंने 5 मुकाबलों में से 4 मुकाबले जीते हैं, लेकिन 3 मुकाबले पहले उनका एक लॉस हुआ था. तो अगर हम विनिंग रन की बात करें, एक ऐसा रन जो सीधा आपको टॉप 4 में लेके जाएगा, न्यूयॉर्क हैव डन दैट एंड दे हैव टेकन एडवांटेज ऑफ डेज जहाँ पे उनके डबल हेडर्स हैं. दिस इज अनदर ऑफ दोज डेज. सो they have slowly built up their momentum. Now 4 wins in a row, and yeah, they're looking pretty good. 4 wins in a row, of course. It did have a lot of 4s and 6s. We'll have a look at it, brought to you by Pulsar NS 125, Showstopper. A lot of that coming in from the likes of Netaji. A match-winning performance from him. We did have a lot of wickets for the Chennai side. We'll have a look at it, brought to you by Lenskart. Just like a New York skyscraper out there, now the New York Apes sit on top of that table courtesy this victory that we have. We'll have a look at that points table right now. And like we've been showing this in the last couple of days, or rather a week from now, New York Apes come on top, 16 points, a good net run rate as well, or rather decent net run rate. Yeah, today we're going to get a bit of a crowd on 16 points and a few teams on 14 points. Look, even Mumbai Grizzlies in with a chance still.
A lot can change later in the day. But yeah, let's talk about this current game. New York Apes moving up. Look at that net run rate, 0.66. And why that is important right now is because it pushes down London and Dubai, not just in terms of run rate, but also the fact that now, the second game of the day, this final day of the round-robin league stage, these sides are going to play their final game. It's a must-win game for both sides if they want automatic qualification. Whoever wins automatically qualifies. We can put a Q on their name. But I think Dubai will be very worried. They'll be under pressure. That negative run rate. जब वो दिल्ली से हारे थे, I think 2.4 overs में हारे थे. That run rate just jumped off a cliff. खाई से कूद गए थे, खाई में कूद गया था उनका net run rate. और उसकी वजह से they are in serious pressure, under serious pressure. If they win, nobody's going to care about the net run rate. But if they lose, how badly will they lose, or what will be the margin of loss? That is going to determine how much further their run rate will fall, and that will open it up for Delhi Sharks, for Kolkata Hawks. So yeah, it's probably it's just all two to of play them for. in the race. I mean, you talk about Kolkata Hawks and Delhi Sharks, isn't it? Yeah, I mean, Kolkata will have to lose the game for Mumbai to come into contention, but that's for later. I'm talking about Unlikely. 16 points. So from Dubai's perspective, if Dubai lose, that brings in Kolkata and Dubai into play. Remember, we already have London and New York who are 16 points. So bit of a pressure for Dubai right now. A lot of pressure for the statisticians out here because they've been on the go right from the start because so many ups and downs, and that's been incredible. And that's how the story has been so far. Now remember, the next game that comes up is between the table number 2 and table number 3. The London Rhinos, beg your pardon, taking on the Dubai Vipers. Another very important fixture, certainly from a point of getting into the final. But before that, we'll be heading into a short little break. I'll see you on the other side. The mania's here. Maniacs wanted. लेकिन ये पाइप चलेगा। फिनोलेक्स पाइप्स, पीढ़ियां बदलेंगी, पाइप नहीं।